यहाँ तो नौका बाकी कौन है बेचारे जुड़े रहते हैं। हाँ, ये हमारे रघुवंशी जी भी हमारे भी अभी तक रघुवंशी भी, हाँ 5-4 नाम मुझे रट गए। मैं देख रहा हूँ कि ये पांच जुड़े हैं। Hi friends, good afternoon. So I was talking about the basic skills of communication, and writing skill, effective writing skills falls in that category. So for effective writing, we must know the basic strategies, how to develop good reading strategy. Creative writing needs creating powerful presentation, tone, punctuation, grammar, spelling, organizing your thoughts, structuring paragraph sentences, writing to keep the reader engaged, softening a negative message. So all these factors are really very helpful for creative writing and effective writing. There are some rules. These basic rules will help a child or a teacher as well how to make his writing effective. The first one is getting to the point, being concise, paragraphing, use of lists, framing effective questions, use of non-discriminatory language, punctuation, grammar, spelling, tone, choosing the right tone, conversational tone. These rules will help us all to have effective writing skills. But as far as framing effective question is concerned, children don't know how to frame the question. And if we will teach him and guide him how to frame the question in the textbook, other than the given question, answering the given questions, we must train our students how to form or frame simple questions, effective questions, and connected questions with the paragraph. So getting to the point, this is a really a wide aspect to avoid bad miscommunication in whether you are writing an email or writing a letter to anyone else. Use of short sentences, because it is being said that long cannot be strong. When you are having a lengthy talk or a long message, it cannot be a strong message. So small can be effective, short can be effective. So for example, if we are forming a sentence and we are telling our students how to form effective sentences and short sentences, so SVO form is used or not. So these are the ideas we should keep in mind. And as far as the paragraphing is concerned, short sentences, short paragraphs, 2 to 5 sentences, creating white space, or quicker to read, engage to read, opening paragraph, 5 W's, who, what, when, where, and why. These questions should be kept in mind while we are forming the paragraph. So
My point here is, as far as right from 8th standard, we are teaching our kids or asking unseen passage questions, but most of us are avoiding this aspect. How to write a paragraph, how to attempt an unseen passage, or how to write notes. We do think that it is not a part of syllabus, but we should keep in mind it is the part of the syllabus, and we should deal with all the areas of learning very effectively. Therefore, this is a list for us all. Benefits of using a list: writer organizes thoughts, reader sees main points, important points are not overlooked. Formatting a list: use numbers or bullets, items should be parallel, capitalize the first word of each point, and be consistent with punctuation. So when we are teaching a lesson, that time also we should form at least gist of the lesson. We should write the names of the characters and connect one character with another character so that relativity can be judged. So is the case with the paragraph writing and paragraph reading. So spacing of a list: double spacing makes reader easier. Double spacing takes more valuable screen space. Single spacing does not enhance the list. So single spacing takes less room. So these are basic ideas while one is writing to have clear look in the written content. So how to use non-discriminatory language? These are the really very essential and dominant factors in our classrooms. Non-discriminatory language is language that treats all people equally. Use language that is free of religious, age, sex bias. Non-discriminatory language can come between you and your reader. So it is most important idea how to use non-discriminatory language. So the tone is very important. So when you are keeping these questions in your mind, your tone will automatically be soft. How can I make sure my message have the appropriate tone? Ask the following questions. Why am I writing this document? Who am I writing to? And what do I want them to understand? What kind of tone should I use? So these basic foundational principles are very much useful while a child is writing. When you will ask your student such questions, then he will be able to understand why I am writing, who am I writing to, and what do I want them to understand. So these are the main ideas for effective writing. What kind of tone should I use with a negative message? When addressing faults or issues concerning an individual, maintain a professional tone that does not attack the individual but makes your position on issue clear. Example: incorrect is, I do not understand why you made such discriminatory remarks. Correct is, discriminatory remarks are not tolerated in this institution. So these are really the good ideas we should adopt and we should deal with. So for writing, these 3 points, you should note down. While you are writing a paragraph, you should confirm at least in a week, you should write a paragraph. You should ask child to write a paragraph weekly. Write at least one sentence daily. Write your thoughts or statements so that
you have a good, effective writing habit. Speaking. So, fourth basic skill for communication is important: what you speak, how you speak, and the way you speak. So, definition for speaking is: speaking can be one of the more challenging skills to develop when learning English. And here I want to give little stress and a suggestion for language teachers that please use direct learning methods. Any language is learned directly when it is spoken, it is listened, it is written, and it is read. Unless until one or a student or a teacher is not having a habit of listening the language, reading the language, writing the language, he will not be able to speak the language. So speaking skills are defined as the skills which allow us to communicate effectively. They give us the ability to convey information, verbal and in a way that the listener can understand. Effective communication, speaking is an interactive process where information is shared, if necessary, acted upon by the listener. So it is important to develop both speaking and listening skills in order to communicate effectively. So here are some elements. I have mentioned 4 elements of speaking skills. First is vocabulary, grammar, punctuation, and fluency. So, because the child do not know what that particular word or particular idea he want to share, how to express it, because he do not have a storehouse of or the vocabulary. He is lacking in vocabulary and he will not be able to convey because of the known right word for whatever he has in Hindi word. And grammar is most important. Punctuation is the third, and fourth one is fluency. I will not talk about all, but I will take up right now the second portion, which is grammar. Next, please. Yes. So, as far as grammar is concerned, we all know that for right and correct message, which should be conveyed by the speaker or by the writer, there must not be grammatical errors. If grammatical errors will be there, because of the errors, the information will be otherwise different. What the speaker or the writer is willing to convey. When the grammar mistakes are there in any language, the message cannot be conveyed well. And punctuation also matters, and it is also an important part. Understanding how to correctly pronounce words in another important element of speaking skills. We learn how to pronounce words by listening to those around us, such as our parents, friends, teachers. Pronunciation varies from country to country and even city to city. But next. A lot of this comes from phonemic awareness. This involves understanding the small units that make up spoken language. English can differ quite a lot compared to other languages. Some phonemes might not be in English as second language learners. ESL means English for second language learner students, native languages. And children's minds are trained to categorize phonemes in their first language, so it can become confusing a little bit. So developing this ability in English can come from playing language games, using songs, poems,
to reiterate rhythm and repetition. Phonics is where students start to see the relationship between the sounds of spoken language and graphemes, which are letters and spellings representing sounds in written language. So, fourth element is fluency in spoken language is something that naturally develops as children go through school, as they are using and practicing speaking skills every day. Reading widely and out loud is a good way to improve fluency, as it introduces children to new vocabulary, reinforces their knowledge for spoken language. Okay, speaking skills on national curriculum. Here is the national curriculum states that spoken language is a crucial part of learning English in schools. Throughout primary school, children will learn to listen and respond to teachers and classmates, build their vocabulary, use spoken language to express feelings, give explanations, and describe. Ask questions to increase their understanding, participate in drama, conversation, role play, discussions, debate, understand formal and informal speech, listen and understand different points of view, hold the attention of the listener. So these are some questions we should keep in mind. What should be my topic and how should I use it? As far as the proverbs are used, daily use, regular words are used, tongue twisters are used. So here are some helpful tips on how to develop English speaking skills. Learn new vocabulary and phrases. Although learning new words and their pronunciation is always beneficial, some words need to be learned in phrases to be of much use when speaking in English. I would like to give you here an example. For example, 2 months back, I asked one student to be the coordinator of Countdown 100 plan. In Countdown 100 plan, we started each day speaking and writing 10 to 20 different sentences. So the day one, after 100 days, the student have a list of so many sentences and they have storehouse of vocabulary. It means by introducing such programs and ideas, you can create an atmosphere of learning in your classrooms. So with this, I would like to give you an example. A cup of tea might be more useful than just learning coffee. So when you are giving a cup of coffee to the child and asking him it is a coffee, so not only that word will be there in his mind, but the taste of coffee will help him to understand the word coffee much better. Same is with the practice of words and phrases. So at last, I would like to say that ensure that the students are understanding how English flows, and as second language learners, we should have a self-talk practice, and which is called also a monologue, and we should say that whatever you are doing, start speaking small sentences, and there are many practice applications nowadays. We can ask our students to download those applications, and even translator and other speaking skills applications or apps are there. So children will learn how to speak that language, and even whatever they are saying, they can record in their phone, and after that listen and compare the sentences they are speaking and the tone they are using. So this is a really very useful idea how to develop a speaking habit.
So at last, I would like to share the question paper I have developed for. At the end of this talk, I would like to say that listen your inner voice and speak what is right. If you will keep these two sentences or two taglines for yourself, you will really do better whatever you are doing. Thank you. So today we will learn at the end of this English session how to develop a balanced question paper. वाला स्लाइड जो आपने सेव किया था ये स्लाइड अलग से सेव किया. Yes. Second, I have developed this question paper for second term exams, and I tried my best to develop this balanced question paper for second terms. And whenever I am taking tests, I really try my best to develop that class test on this model question paper based questions should be asked, so that at least first 16 questions which are being asked of 1 mark MCQ questions, and all are in together, varying from all the sections of the syllabus, whether it is textbook or for example, when you are reading these instructions, this question paper has 13 questions and all are compulsory. It means there is no option as far as question is concerned. Child has to leave no question out of these. He has to attempt all the 13 questions, and this question paper contains 4 sections. A is MCQ. So B section comprises of reading section, and that has 1 paragraph for comprehension questions to be answered, and second note making and summary making, and third section C is creative writing skills, and fourth section D is from literature, where both the books Vistas and Flamingo, both are inclusive. Attempt all questions based on specific instructions for each part. Write the correct question number and part thereof in your answer sheet. So when we are not asking students to write the answers of one section together and attempt the questions section wise, the children are whatever attempting the way they like, and that is really confusing for the evaluator during evaluation, and examiners are really disturbed, and they because of their irritation or non-comfortability, they can deduct the marks of the students, and it is really very sad to say. So we should adhere to prescribed word limits while answering the questions. So these are some questions I have formed. I'm not going to read all the questions and options for the teachers, but I'm just discussing. First question is based on the letter writing. Second question is based on advertisement. Third question is also based on letter to editor. And fourth one is also from the letter section, how which section is inclusive in letter writing. Fifth one, so it means first 4 questions are from grammar portion, and next
3 questions. 5, 6, and 7 are from poetry. So the next, and then even 8, 4 questions are from poetry, and next 9th, 10th, these questions are from this flamingo. Next. And even last concluding questions are from vistas. So I can say that most of the questions from this section, MCQ section A, are distributed in a very orderly manner, and we can say that we should keep in mind that every child must answer every question if we have given him or her a thorough knowledge, detailed ideas how to form questions. If child do not know how to form the question, then he will not be able to give the right answer of these MCQ answers, MCQ questions. Next. So in section A, only 16 questions will be asked. Out of them, first 4 are from grammar section, next 4 are from poetry, next 4 are from vistas, and next 4 first means 12 to 16, 13 to 16, last one are from vistas. So flamingos questions are from 9, 10, 11, 12. So in this sequence, we can form the questions and take a pre-board exam if we are willing to. So here is section B, which is considered as non-attempted areas, and we leave it at the chance of the child. And this is not good from our part. So whenever we are helping or strengthening this muscle of exercise in answering the questions of comprehension or unseen paragraph, we should at least practice 10 to 20 or 30 different paragraphs, and child must have a habit. So through forming WhatsApp group, we can give one passage to write, and when they come with the written paragraph, we can solve that paragraph in classrooms next day, so that child must have a good habit in solving the unseen paragraph. Next. Next. So out of this paragraph, 2 questions will be filling up the statement, and 3 questions will be asked briefly, and last 2 questions of unseen passage are 3 questions will be asked from having synonyms, similar meaning. So I have seen one thing, that these answers of these given words are not known to the students because they have very less vocabulary and they are unable to write the right answer. So when note making is concerned, it is really neglected part of the English question paper. As far as I'm concerned, in an evaluation process, whenever I see most of the students write the same paragraph or few lines as a summary. So why child does not know how to write the notes? Because if the practice is not done in the classroom, he will not be able to attempt this question. So very simple is 2-3 lines taking up and writing the notes, and unnecessary unnecessary sentences should be deleted. Not a complete sentence should be written in note making. So these are the ideas or basics we should share with the students, so that this section the students can attempt. And 4th question next. Section C, writing skill.
right? In writing skill, question number 4 is of 4 marks, and it is about writing a notice or writing a report. And when we are giving hints, or the child is being asked to suppose his name Manvi or Madhav. So when the instructions are being given, child must assume himself as one of the character given in the question. So when the child is not following the instructions, he will not be able to write or get complete marks in the question. Next. So in section C, question number 5 is of writing a paragraph or writing a small report, and that report is about to be written in a particular form. For example, organizing a health camp or a blood donation camp and whatever it is. So it should be interactive, or we should convey the idea going there. Or if the child is not getting involved, he will not be able to attempt this question. So letter writing, even when we are not sharing with the students that how many parts of letter are there, what should be written on the top, and when in the question the details are given, you have seen an advertisement. So unless until we are not discussing the main questions or the way of the questions are being asked, the students are not able to answer the questions accordingly, and they are losing their marks because of non-guidance. And this can be a habit if we are giving them more practice and giving them better ideas and giving them all details of how to prepare this letter writing skill, and how to write the letter, and what should be the heading of the letter, what should be the there in the beginning sentence in the body of the letter. So when we are conveying all these small parts in detail, then students will be able to answer the question well. In section C, question number 7 is also about writing a paragraph or writing about his experience or the way he saw something. For example, question 7's or part, while traveling from Dharamshala to Mandi, you saw children working at shops and dhabas and tea stall, etc. You decided to write an article on the problem of child labor. So what kind of title should be given? Or the child labor is the title of the paragraph, and when we are giving this title, what should be inclusive? Because it is the experience of the child, or during the journey, what did he see and how does he write the article? So section D comes from poetry section, and the internal choice is given in this question. Only 3 marks questions, 3 questions are being asked, and first question is very classical questions, and all the time it is being asked, and even then we have seen that children are not able to even write the answer of this question. So, but when the students will practice more, they can answer more. Okay. So section 9, question number 9 is of 4 marks, 2 questions the child has to attempt from the poetry section, and question number 10, next 2 questions will be asked from the flamingo, and next. And these question number 12 and 11 and 12 both are of having 6 marks, and these questions are from both the books.
and these are really of long answer questions, and when the child is answering long answer questions, he must have a right order of answering the question. And last one, and even in both the sections, question number 11 and 12, internal choice is being given. So last question is from the general idea from the lessons inclusive in the textbook of Flamingo, and as this is the question, where are the indications of future of humankind? So such questions, when asked, child is confused, little confused from which lesson this question should be or might be. So when we are discussing the topical studies or topical ideas from Lost Spring, we can give the child labor, or the lesson, last question, Bama's brother, on which street he lived. So from this question, such question can be asked, the childhood memories or memories of your past. So when such questions are being asked, you can say that children can attempt those questions and can have good marks. Okay. So इसके बाद हम blueprint share करेंगे. उसको स्लाइड में जाएंगे ना. हाँ, यस, थोड़ा सा ऊपर. Yes, okay. So in difficult area, blueprint is here like this, that easy, moderate, high level questions are being asked, and we are distributing from section side and question wise. So you can identify while having those questions, how many questions are in total and how many marks will be inclusive from easy section. At least the child who is not able to attempt all the classes, or being present in all the classes, or could able to attempt all the sections, so from easy section he can qualify the class. So 33 marks are easy, moderate are of 24 marks, and 23 marks are little high end, and these are for merit holder students. Next. नहीं, पिछले आगे ऊपर थोड़ा ऊपर परसेंटेज देखिए. Yes, weightage of percentage जो है वो easy में 41% is there, and moderate 30% is there, and 29% is high. So this is a distribution of marks. 1 marks question का, 1 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो सिर्फ 16 पूछे जा रहे हैं. ठीक है, सेक्शन ए में. सेक्शन बी में 8 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एंड इन सेक्शन डी 3 questions are being asked. In total, 27 questions are asked of 1 mark, and 2 marks के सेक्शन डी में जो है वो 6 questions पूछे जा रहे हैं. So it is of total 6 to 12 marks, and then 3 marks का हमारा एक ही सेक्शन है सेक्शन बी में पोइट्री से, और वो एक क्वेश्चन है, तो 3 बन जा 3 मार्क्स इसके हैं, एंड 4 मार्क्स का 2 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं सेक्शन बी में और सेक्शन सी में एक एक. 6 मार्क्स के क्वेश्चंस जो हैं वो 3 पूछे जा रहे हैं सेक्शन सी में और 2 पूछे जा रहे हैं सेक्शन डी में. तो ये
6 मार्क्स के क्वेश्चंस जो हैं वो टोटल 5 हैं और 30 मार्क्स हमारे यहाँ बनते हैं. So in total we can see total marks फर्स्ट 1 नंबर के 27, 2 नंबर के 13, 3 के 3 और 4 नंबर के 2 क्वेश्चंस पूछे गए 8 मार्क्स और 6 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस पूछे गए 30 और इन टोटल ये ब्लूप्रिंट है 80 मार्क्स का, जिसमें से 20 मार्क्स की आपकी इंटरनल बच्चे की आएगी और इंटरनल असेसमेंट में आपको मालूम है क्या क्राइटेरिया है, व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर इंटरनल असेसमेंट. एंड विद दिस I thank you all for having this section of language learning and how to develop the balanced question paper in English subject. Thank you. नेक्स्ट सेशन है नीलम मैम का, लेक्चरर इन हिंदी, DSS मंडल. नमस्कार, मैं नीलम ठाकुर, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मंडल. मैं प्रवक्ता हिंदी. आज का जो इवनिंग सेशन है ये, इसमें मुख्य रूप से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, परख कार्यक्रम और मुख्य रूप से योग्यता आधारित प्रश्न पत्र, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पेपर के बारे में ही. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षा में व्यापक परिवर्तन की परिकल्पना करती है. इससे उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा से भारत में समतापूर्ण जीवंत ज्ञान और समाज में बदलाव में ही सीधा योगदान करती है. NEP जो है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है, वो हमारे छात्रों को, युवाओं को वर्तमान और भविष्य की अलग अलग राष्ट्रीय और वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करेगी. जो भी आगे हम देख रहे हैं कि वैश्विक स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर जो भी चुनौतियां हैं, उनके लिए ये तैयार करने के लिए कार्यक्रम है. यहाँ में आज बेसिकली जो है इवैल्यूएशन, मूल्यांकन से संबंधित ही NEP के पॉइंट्स पर बात करूंगी. NEP तो एक काफी वास्ट वो है, लेकिन मैं मूल्यांकन पर ही बात करूंगी. NEP में निश्चित किया गया है कि रेगुलर, फॉर्मेटिव, समेटिव और कॉम्पिटेंसी बेस्ड इवैल्यूएशन, ताकि बच्चों का निश्चित समय पर रचनात्मक, योग्यात्मक और कॉम्पिटेंसी बेस्ड ही उनका मूल्यांकन जो है वो सही से हो सके. प्रमोटिंग लर्निंग प्रोसेस, कि लर्निंग का जो भी प्रोसेस है उसको भी प्रमोट किया जाए और बच्चों की जो है ओवरऑल डेवलपमेंट जो है उस पर ध्यान दिया जाए. बच्चे जो है वो समझ कर पढ़े, ना कि रटे. फोकस ऑन असेसमेंट फॉर लर्निंग, जो भी हम पढ़ाएं कक्षा में उसकी असेसमेंट साथ साथ होती है. इसके अलावा कि हायर ऑर्डर स्किल्स जैसे एनालिसिस, क्रिटिकल थिंकिंग, कंसेप्चुअल क्लैरिटी, ये सब भी क्लियर होता रहे. समझकर नए विषयों पर वो आसानी से लिख सकें, उन पर बात कर सकें. ऐसा नहीं है कि लैंग्वेज में कि कुछ आपने पढ़ा दिया वो रट लिया जाए. उस सब्जेक्ट को जब वो समझ आएंगे तो कोई भी आप विषय पर बात करेंगे या कोई भी विषय उन्हें देंगे तो उस पर वो आसानी से लिख सकें. सभी बोर्ड जो हैं एग्जाम और इवैल्यूएशन पैटर्न जो है उसको रीडिजाइन कर रहे हैं, ताकि छात्रों का सही मूल्यांकन हो सके. सिर्फ एकेडमिक ही नहीं, उनके बाकी जो भी हैं एस्पेक्ट, उन पर भी बात की जा रही है.
और कोचिंग जो कल्चर है उसको थोड़ा डिस्करेज किया जा सके, और स्टूडेंट्स जो है वो अपने मनपसंद विषय, कोई भी विषय है, चाहे वो साइंस स्टूडेंट है, वो आर्ट्स का विषय पढ़ना चाहता है तो वो आर्ट्स का विषय पढ़ सके, और अगर आर्ट्स का है उसको कोई साइंस सब्जेक्ट कोई अच्छा लगता है तो वो उसको भी अपने उसमें ऐड कर सके। परख इंडिया की पहली असेसमेंट अथॉरिटी है जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के साथ सहयोग कर रही है कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन सही से हो सके। तो इसी उद्देश्य से परख जो है वो संस्था जो है वो NEP 2020 के उद्देश्यों के साथ काम कर रही है। परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024, इसके मुख्य उद्देश्यों से पहले मैं बात करूंगी। परख, इसकी फुल फॉर्म P से परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो परख का मुख्य इसका उद्देश्य यही है कि योग्यता आधारित मूल्यांकन हो। इससे क्या होगा, शिक्षा नीति में भी सुधार होगा, छात्रों में भी हमें कुछ सुधार देखने को मिलेगा, बाकी सीखने की टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है उसमें भी सुधार देखने को मिलेगा। इससे मुख्यतः छात्रों को लाभ होगा, उनको उनकी कमियों का पता चलेगा। परख का दूसरा मुख्य उद्देश्य रहा है डेटा आधारित नीति निर्माण। अभी हाल ही में हमने देखा था कि 4 दिसंबर को टेस्ट जो सर्वेक्षण करवाया गया था, 3rd, 6th और 9th क्लास का उन्होंने टेस्ट ऑर्गेनाइज किया था। 88,000 से अधिक स्कूलों में ये सर्वेक्षण हुआ था। तो इस सर्वेक्षण से ही पता चलता है कि NEP को किस तरह से लागू किया जाए, और यही डेटा जो है वो नीति निर्माण में भी काम आ रहा है। शिक्षकों का सशक्तिकरण, इसमें सिर्फ छात्रों की बात नहीं है या डेटा आधारित नीति निर्माण की बात नहीं है, शिक्षकों का भी सशक्तिकरण किया जा रहा है। नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं तो उनको सीखने में नए नए तौर तरीके जो हैं उनसे उनको अवगत कराया जा रहा है ताकि वो भी अपडेट हो। पेपर सेटर हैं, उनको नई जानकारी, जैसे अभी हम कर रहे हैं ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड प्रोग्राम, तो पेपर सेटर को भी नई जानकारी कि किस तरह का क्वेश्चन पेपर है, किस तरह से स्टूडेंट्स को असेस करना है। योग्यता आधारित क्वेश्चन पेपर तैयार करना, उसके साथ साथ क्वेश्चन बैंक तैयार करना, साथ ही साथ आजकल जैसे अभी मैम ने भी बताया था कि क्वेश्चन बैंक भी तैयार किया जा रहा है बोर्ड के द्वारा। तो ये सारे परख और NEP के सारे उद्देश्य हैं जो कि परख इनको पूरा करने में सहयोग कर रहा है। बच्चों के रिपोर्ट कार्ड रीडिजाइन किए जा रहे हैं कि जिसमें उनका कंप्लीट डाटा जब से बच्चा स्कूल में आता है, एकेडमिक्स के साथ साथ बाकी उनके एस्पेक्ट उनको भी असेस किया जा सके। तो ये रिपोर्ट कार्ड भी अब रीडिजाइन किए जा रहे हैं। सभी बोर्ड जो हैं उनमें इवैल्यूएशन के जो भी पैटर्न है उनमें समानता लाई जा रही है। अभी हम एक स्लाइड आप देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर टाइप ऑफ क्वेश्चंस वेट बाय मार्क्स बताया है। तो यहाँ पर कुछ एक अलग अलग स्टेट्स की बात की गई है कि किस तरह से उनके क्वेश्चन पेपर जो है डिजाइन किए जाते हैं और उसमें मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से। जैसे यहाँ ब्लू से इंडिकेट किया गया है लॉन्ग आंसर, डार्क ब्लू से MCQ बहुविकल्पीय जो भी क्वेश्चन है, ऑरेंज कलर से शॉर्ट आंसर और लास्ट में वेरी शॉर्ट आंसर। तो हम 1 या 2 उदाहरण देखेंगे। जैसे पहले है पंजाब का है, तीसरे नंबर पे आप देखेंगे कि पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड है। इसमें जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है वो आप देख रहे होंगे कि 26% है। और आंध्रा की अगर हम बात करें तो आंध्रा में है 23.8% लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। और HP बोर्ड की बात करें, लास्ट में देखेंगे, सेकंड लास्ट है HP बोर्ड में, तो 68.7% जो है वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आए हैं। तो इसका स्लाइड का दिखाने का कोई और मतलब नहीं है, बस ये है कि अलग अलग बोर्ड जो है वो अलग अलग पैटर्न फॉलो करते हैं, उनमें कोई अभी तक इतनी समानता जो है वो नहीं आई है। नेक्स्ट स्लाइड है डिफिकल्टी ऑफ क्वेश्चंस वेट बाय मार्क्स। अब यहाँ पे है कि इसकी बात करें तो यहाँ पर डिफिकल्टी लेवल, अगर हार्ड क्वेश्चन जिनको हम कहेंगे, तो वो गोवा बोर्ड पर इसमें पूछे गए हैं 44.6%। और हिमाचल की बात करें तो इसमें हार्ड क्वेश्चन जो है वो केवल 9.38% है। तो
हम देख सकते हैं कि इनमें सभी में बोर्ड्स में अब एनईपी के तहत अब सभी में इनमें समानता लाने का प्रयास किया जा रहा है कि सभी बोर्ड जो हैं वो इवैल्यूएशन के सिस्टम में और बाकी चीजों में भी समानता लाएं। एग्जाम के बर्डन को कम किया जा रहा है। परख और एनईपी में ये दोनों में ही एक दिया गया है कि एग्जाम का बर्डन जो है बच्चे उसको बर्डन समझ कर ना काम करें, उसको कम किया जा रहा है। हाई क्वालिटी असेसमेंट सिस्टम बनाया जा रहा है और जहां पर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स है, समानता नहीं है, उसे सही किया जा रहा है। पेपर का डिफिकल्टी लेवल जो भी रहेगा उसको मेजर करने का तरीका उसको किया जा सके। नेक्स्ट हम बात करेंगे एनसीएफ की, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जो कि स्कूल का जो पाठ्यक्रम है उसको बनाया जाता है। तो ये स्कूल का पाठ्यक्रम बनाने के लिए भी कुछ एनईपी में काफी बातें कही गई हैं कि किस तरह का राष्ट्रीय पाठ्यक्रम होना चाहिए और इसी में राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा में स्पष्ट किया गया है कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग होनी चाहिए, कि जो भी आप पढ़ा रहे हैं उसको असेस भी करना है, साथ साथ उसका पता भी होना चाहिए कि कितना आप पढ़ा रहे हैं, कितना बच्चों तक पहुंच रहा है। असेसमेंट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, एक्टिव रोल ऑफ लर्नर, कि बच्चे जो है वो कितनी एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, टीचर कितना एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इक्विवेलेंस ऑफ डिफरेंट बोर्ड्स, ये अभी बात पहले भी एनईपी में भी यही कही गई है, परख में भी, और यही इसमें किया गया है कि विभिन्न बोर्डों में समरूपता लाई जाए। एजुकेशनल इवैल्यूएशन जो है वो क्वांटिटेटिव तो है ही है, अब उसको क्वालिटेटिव भी बनाना है कि उसमें भी इम्प्रूवमेंट हो। तो इवैल्यूएशन की हम बात कर रहे हैं तो टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन कुछ एक बात करूंगी। टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं 2 या 3 इनकी बात करूंगी कि फॉर्मेटिव है, कि रचनात्मक मूल्यांकन किस तरह से किया जाए। जैसे हिंदी विषय में हम नए नए विषयों पर लिखते हैं तो बच्चों पर हम ये लगातार देख सकते हैं, उनको कोई ना कोई टॉपिक दे सकते हैं कि उस पर वो किस तरह से लिख सकता है। बच्चे जो है अलग अलग, अगर आप एक सिंपल सा टॉपिक दे दें कि आज आप सुबह आए हैं स्कूल से, घर से स्कूल की ओर आए हैं, रास्ते में आपने क्या क्या देखा, तो वो 10 शब्द लिखने के लिए अगर आप उनको बोल दें, तो 10 लाइनें कुछ लिखने के लिए बोल दें, तो वो बच्चे लिखेंगे कि उन्होंने क्या क्या देखा है, और आपको भी पता चलेगा कि वो कितना समझ पाते हैं, कितना सोच सकते हैं, कैसे वो लिख सकते हैं। एक है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, कोई भी आप टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं तो उसके बारे में थोड़ा सा पता कर लें, कुछ क्वेश्चंस पूछ लें पाठ पढ़ाने से पहले, और उसके बाद भी तो ये एक तरह से वही हुआ डायग्नोस्टिक, या इसको हिंदी में कह सकते हैं निदानात्मक मूल्यांकन। थर्ड है समेटिव मूल्यांकन। तो समेटिव मूल्यांकन में क्या है कि हम टोटल देखेंगे 1 साल के बाद या 6 महीने के बाद उस बच्चे ने कितना सीखा है, उसका संपूर्ण प्रदर्शन कैसा है, और वो अगली क्लास में जाने के लिए तैयार है, वो आएगा समेटिव इवैल्यूएशन। नेक्स्ट बात करूंगी मैं प्रिंसिपल ऑफ इवैल्यूएशन, इसके सिद्धांत क्या है, किन बातों पर चलकर क्या देखना है हमने इवैल्यूएशन से पहले। तो सबसे पहले कि ऑब्जेक्टिव क्या है और हमने इवैल्यूएट क्या करना है, प्रश्न किस तरह के बनाए हम छात्रों का ताकि सही मूल्यांकन हो सके, क्या चीज आप एसेस करना चाहते हैं कि उसकी नॉलेज या कि उसको कितना और ज्यादा वो बाकी हाई क्वालिटी की जो भी आप उसमें से इवैल्यूएशन में चाहते हैं उस तरह के प्रश्न। टेक्निक्स, कैसे इवैल्यूएट करना है, कौन सी टेक्निक्स या कौन से तरीके अपनाने हैं ताकि हम बच्चों के ज्ञान को सही से परख सकें। वैरायटी ऑफ टेक्निक्स फॉर कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ ए बैलेंस्ड क्वेश्चन पेपर। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे स्टेप्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले हमें देखना है सिलेबस, क्योंकि अभी हमने कई बार पीछे भी कुछ न्यूज में भी आ रहा था कि कई बार वो सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं आते, 1-2 क्वेश्चन कुछ अलग से आ गए। तो सबसे पहले बोर्ड की साइट पे जैसे बताया मैम ने कि बोर्ड की साइट पे पहले चेक करना है कि बोर्ड का सिलेबस है क्या, और उसके सिलेबस के हिसाब से हम चलेंगे। फिर है प्रिपरेशन ऑफ ए डिजाइन,
कि हम एक फॉर्मेट, एक संरचना बनाएंगे, ओवरव्यू क्वेश्चंस बनाएंगे, कितने क्वेश्चंस रखने हैं हमने पाठ्यक्रम के हिसाब से। फिर हम एक ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे कि कितने टाइप के क्वेश्चन, स्कोर क्या रहेगा, टाइम क्या रहेगा, मार्क्स कितने होंगे, वो एक ड्राफ्ट बना लेंगे। राइटिंग ऑफ क्वेश्चंस ब्लूप्रिंट के हिसाब से। असेंबल क्वेश्चंस इन द फॉर्म ऑफ ए क्वेश्चन पेपर, फिर उसको हम क्वेश्चन पेपर की फॉर्म में ले आएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, सेकंड क्या रहेगा, उस तरह से। प्रिपेयरिंग स्कोर की मार्किंग्स की, ये बहुत जरूरी है कि कौन सा क्वेश्चन आप 2 नंबर का रख रहे हैं, कौन सा 3 का रख रहे हैं और कौन सा 4 का रख रहे हैं। कैरिंग आउट क्वेश्चन वाइज एनालिसिस, कौन कौन से क्वेश्चन है, किस टाइप के क्वेश्चन है। और अंत में है मॉडरेशन ऑफ ए क्वेश्चन पेपर। आपने क्वेश्चन सारा सेट कर लिया, फिर उसको चेक करना है आपने कि जो आपने ब्लूप्रिंट तैयार किया है उसके हिसाब से वो सही से आया है या नहीं। क्वेश्चन पेपर तैयार करने से पहले कुछ एक क्वालिटीज भी हमें ध्यान में रखनी है कि कौन कौन सी क्वालिटीज हैं। क्वेश्चन जो है आपका पेपर ऑब्जेक्टिव बेस्ड, इंस्ट्रक्शन क्लियर होनी चाहिए, कौन सा क्वेश्चन आप कितना चाहते हैं, क्या क्या उसमें क्वेश्चंस में आप आंसर क्या चाहते हैं। कंटेंट बेस्ड, लैंग्वेज जो है वो एज के हिसाब से और कक्षा के हिसाब से उस हिसाब से होनी चाहिए। डिफिकल्टी लेवल पहले से तय करें, कितने % जो है वो आपने डिफिकल्टी लेवल रखना है मेरिटोरियस जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। वैल्यू पॉइंट, स्टेप बाय स्टेप मार्किंग। कोई अगर बच्चा जो है, जैसे मान लीजिए हिंदी में हमारा आता है प्रसंग और व्याख्या लिखी, तो आपने अगर 3 मार्क्स का दिया है तो प्रसंग के लिए 1 अंक रखा है, व्याख्या के लिए 2, तो अगर वो 1 भाग करता है तो उसको उस भाग के मार्क्स जो है वो मिलने चाहिए। अब है प्रश्न पत्र संरचना, जो हिंदी में अभी यहाँ पे हिंदी +1 +2 की ही बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो एस्से टाइप, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर टाइप और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो है वो इसमें आते हैं। तो अलग अलग प्रश्नों की अलग अलग खूबियां भी हैं, अलग अलग कुछ खामियां भी रहती हैं, तो इसलिए पेपर में इनको सब तरह के प्रश्न जो है वो डाले जाते हैं। हिंदी में एस्से टाइप भी हैं, मल्टीपल चॉइस भी है, शॉर्ट आंसर भी और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी आते हैं। तो निबंधात्मक प्रश्न है, अगर हम इनकी बात करें तो इससे बच्चों की जो है लेखन क्षमता जो है उसमें सुधार देखने को मिलता है। वो अपने विचारों को, अगर उन्हें याद है तो वो अच्छे से उनको लिख सकते हैं। और इसमें एक कमी हमें देखने को मिलती है कि इससे हम सारे सिलेबस को कवर नहीं कर पाते। अगर हमने 2 या 3 4 क्वेश्चन दे भी दिए तो वो बहुत कम सिलेबस जो है उसको हम इसमें इंक्लूड कर पाते हैं प्रश्न पत्र में। और इनको हम 100 से 200 शब्दों में लिख सकते हैं। ये 4 नंबर के भी आते हैं, 5 के भी हैं। उदाहरण के लिए जैसे आपका निबंध आएगा तो वो 4 अंक का है, और सेकंड बुक से अंतराल भाग 2 से आते हैं प्रश्न, वो भी 4 अंक का रहता है, पत्र 4 अंक का रहता है। तो इसकी एक ही कमी है कि इससे हम पाठ्यक्रम को जो है वो ज्यादा नहीं कवर कर पाते हैं। दूसरी तरह के हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि 2 या 3 नंबर के आते हैं, 2 या 3 मार्क्स के, और इनके उत्तर जो है वे 3 या 4 पंक्तियों, बच्चों को पता होना चाहिए कि 4 या 5 पंक्तियों में वो उनका उत्तर जो है वो आ जाना चाहिए। 50 से 60 वर्ड्स लिमिट आती है। और ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो है, लघु उत्तरीय प्रश्न जो है, इसमें काफी सिलेबस जो है हमारा कवर हो जाता है, प्रश्नों में विविधता आती है और बच्चे जो है वो इनको लिखने का उनको तरीका भी पता होता है। 2-3 नंबर के प्रश्न जो है उन्होंने याद भी किए होते हैं, कुछ समझ भी आते हैं, तो वो उन शब्द अगर उन्हें सुना भी है तो वो इनको लिख लेते हैं। तो ये कई बार ये भी इसमें एक कमी हो सकती है कि कई बार ये रट्टे को भी प्रोत्साहित करते हैं इस तरह के प्रश्न। और इसमें हम काफी तरह के प्रश्न हिंदी में आ सकते हैं कि सिंपल आपने क्वेश्चन की इससे कवि का क्या आशय था, कोई भी आप पंक्ति जो है वो कविता से दे सकते हैं कि इसका क्या आशय है, उसका क्या अर्थ है, वो लिखा जा सकता है। गिव रीजन, कोई रीजन वाला क्वेश्चन दे सकते हैं। एनालिसिस वाले क्वेश्चन इसमें सब आ सकते हैं। थर्ड टाइप जो है हिंदी में हम लोग वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, जो 1-1 नंबर के आते हैं, आसान होते हैं, बच्चों को सुना है तो वो लिख लेते हैं।
डायरेक्ट इनके आंसर होते हैं और इसमें कोई गेस वाला काम भी नहीं रहता है। लास्ट जो कि इस बार काफी ऐड हुए हैं क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो फर्स्ट क्वेश्चन इस बार जो है नए पैटर्न में जो पेपर आएगा उसमें पहला क्वेश्चन जो है उसके 16 भाग जो है इसी तरह के बहुविकल्पीय क्वेश्चन। तो इसमें बच्चों को अधिक अंक प्राप्त करने का मौका मिलता है। अगर उन्होंने पूरा सिलेबस पढ़ा है तो उनके अच्छे अंक आ सकते हैं। बच्चे के विस्तृत ज्ञान को हम परख सकते हैं, ज्यादा पाठ्यक्रम को इसमें कवर कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी कुछ खामियां रहती हैं कि बच्चे इसमें कई बार जो है वो अनुमान या जिसको हम तुक्का कहते हैं वो लगा लेते हैं कि 4 में से कोई ऑप्शन तो मिलती जुलती है तो कोई तो सही होगा। और इस प्रश्न पत्र को बनाने में टाइम जो है टीचर का ज्यादा लगता है और उसका कौशल भी ज्यादा लगेगा। अब यहाँ पे हम इसका +2 का जो पेपर है इसका प्रारूप देखेंगे कि कौन से क्वेश्चन जो हैं कितने मार्क्स के आएंगे। हमारे अभी हिंदी के ये आएगा सर स्लाइड। हाँ, इसमें हम अभी 3 किताबें जो है वो पढ़ा रहे हैं, अंतरा भाग 2, अंतराल भाग 2, अभिव्यक्ति और माध्यम। तो इस बार का जो नया पैटर्न है इसमें ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये चेंज हुआ है। ये तीनों बुक्स में से आएगा, अंतरा, अंतराल, अभिव्यक्ति और माध्यम। प्रश्न संख्या 1, इसमें 16 भाग रहेंगे, 1-1 अंक के होंगे। और दूसरा भाग जो आएगा, दूसरा क्वेश्चन जो है वो अपठित गद्यांश होगा। कोई भी कहीं से भी ऐसा नहीं कि बुक से आता, वो अपठित गद्यांश पहले भी रहता था ये क्वेश्चन। तो इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे 6, 1-1 अंक के। इससे अगला रहेगा अपठित पद्यांश जो किसी कविता में से लिया जाएगा, उसमें भी 4 भाग होंगे 1.5 नंबर के, वो 6 नंबर उसके हो जाएंगे। फोर्थ क्वेश्चन जो है वो आएगा निबंध और पत्र, ये रचनात्मक भाग से हैं और ये 4-4 अंक के होंगे। नेक्स्ट अभिव्यक्ति और माध्यम, जो तीसरी पुस्तक रहती है अभिव्यक्ति और माध्यम, इसके प्रश्न आएंगे लघु उत्तरीय, 2 भाग होंगे, 3-3 अंक के होंगे ये। और ये कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप भी, मतलब 1-1 मार्क्स के भी होते हैं। इस बार जो है ये 2-2 अंक के आ रहे हैं। फिर इसके बाद 7वां प्रश्न जो है ये काव्यांश, जो हमारी कविताएं हैं, जो पुरातन कवि हैं या नए कवि जो हैं, ये काव्य भाग में से आएंगे। सप्रसंग व्याख्या, प्रश्न उत्तर होंगे, कवि परिचय होगा, साहित्यिक विशेषताएं हो सकती हैं। तो इसमें से निबंधात्मक प्रश्न आएगा 1, 4 अंक का। और 8वां 9वां प्रश्न जो है वो लघु उत्तरीय प्रश्न। फिर गद्य भाग में से है, जो भी आप पाठ पढ़ाते हैं इनमें, उसमें से 10वां प्रश्न आएंगे निबंधात्मक, उसमें ऑप्शन रहेगी और वो 4-4 अंक के आएंगे। 11वां प्रश्न और 12वां जो है लघु उत्तरीय, ये भी गद्य भाग से आएगा। प्रश्न नंबर 13 जो है और 14, ये दूसरी पुस्तक है अंतराल भाग 2, इसमें से आएंगे। ये एक लघु उत्तरीय प्रश्न और एक निबंधात्मक प्रश्न आएगा। तो ये रहेगा इस बार का प्रश्न पत्र प्रारूप। पहले सिर्फ ये जो है फर्स्ट भाग जो है ये अलग चेंज हुआ है, बाकी ये सब चीजें आप पुराने प्रश्न पत्र वैसे भी इसमें देख सकते हैं। सिर्फ एक चेंज जो है ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे 1-1 अंक के। तो यहाँ पे जो सिंपल क्वेश्चन है, सरल जो प्रश्न है वो 40%, मध्यम 40% और कठिन जो है वो 20% जो है वो इसमें ऐड किए गए हैं। तो ये ब्लूप्रिंट वाले जो अभी बात की है हमने, ये सारे आपको स्लाइड पर मैंने अभी पीछे दिखाए हैं ये कि हाउ टू डेवलप अ ब्लूप्रिंट। अब है बैलेंसिंग क्वेश्चन डिफिकल्टी। ये डिस्कस हो गया। नेक्स्ट है हाँ जी मार्किंग स्कीम। स्टेप वाइज का भी बता दें। हाँ जी, इसका स्टेप वाइज। ठीक है।
तो बैलेंसिंग क्वेश्चन डिफिकल्टी अभी मैंने बात की कि इजी क्वेश्चन जो है 20 से 30%, मॉडरेट जो है 40 से 50% और चैलेंजिंग क्वेश्चन जो है 20 से 30%। तो स्टेप वाइज इस बार बात कर रहे हैं कि जो आंसर होगा उसमें स्टेप बाय स्टेप मार्किंग की बात करें, स्टेप वाइज। हाँ, उसमें स्टेप बाय स्टेप मार्किंग अभी मैंने बात की भी थी अभी कि अगर आप एक कोई एग्जांपल दिया था कि 3 नंबर का अगर प्रश्न आता है, प्रसंग लिखना है, व्याख्या लिखनी है, तो वो हमारे दिमाग में होना चाहिए कि प्रसंग के लिए अगर हम 1 अंक देते हैं तो व्याख्या के लिए 2 अंक है। तो बच्चा अगर प्रसंग लिख रहा है तो हम उसे 1 नंबर जरूर दें, या उसने व्याख्या लिखी है तो उसको उसके मार्क्स जो है वो मिलने चाहिए। तो मार्किंग में ऐसे नहीं होना चाहिए कि ये ठीक लग रहा है तो चलो इसमें 4 दे दिए, इसमें 2 दिए, या ऐसे है ऐसे में भी इस तरह से कर दिया कि 3 दे दिए, 4 दे दिए। वो देखना है कि स्टेप बाय स्टेप मार्किंग हो कि बच्चे ने कितना लिखा है, उसको मैक्सिमम उसका बेनिफिट मिलना चाहिए। इसके साथ है सर ये पीछे पिछले हाँ ब्लूप्रिंट का हो गया। उसके बाद बैलेंसिंग क्वेश्चन डिफिकल्टी, क्रिएटिंग ए बैलेंस्ड मार्किंग स्कीम। हाँ यही मैं बता रही थी अभी कि मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सही होना चाहिए, जिस तरह से आपको इंस्ट्रक्शन मिली है बोर्ड से, स्टेप बाय स्टेप मार्किंग, और कंसिस्टेंसी बनी रहनी चाहिए। वेटेज टू की टॉपिक्स, जो मेन टॉपिक है उनको प्राथमिकता दी जानी चाहिए। लास्ट में बात करूंगी कि पेपर रिव्यू या क्वालिटी चेक किस तरह से है। तो पेपर अगर आपने बना लिया है तो उसको एक बार रिव्यू जरूर करें। इसके 1-2 तरीके हैं, सेल्फ रिव्यू कि अपने आप चेक करें आप एक बार फिर से, पीयर रिव्यू आपके साथ जो भी शिक्षक हैं उस संबंधित विषय के, उनसे बात कर सकते हैं। पायलट टेस्टिंग, कुछ एक क्वेश्चंस जो है वो बच्चों से इनडायरेक्टली या डायरेक्टली किसी तरीके से या बाकियों से बात करके उनको पूछ के या लिखवा के थोड़ा सा देख सकते हैं। फाइनल एडजस्टमेंट, आप क्वेश्चन जो भी आपने सेट किए हैं उसी के फाइनल एडजस्टमेंट फिर इसके बाद करें, पेपर रिव्यू के बाद। और इसके साथ साथ मैं एक बात और करना चाहती हूँ, मैम ने मुझे बताया था कि ये सिलेबस का है, तो हमारा +1 का जो है सेकंड बुक है अंतराल भाग 1। इसमें कुछ एक जो पार्ट हटाए गए थे, पहला था अंडे के छिलके, हिमालय के अमर आराधक और हिमालय के अमर आराधक भाग 2। तो ये 3 भाग हटाए गए थे, लेकिन ये लेटर निकली है 30/5 की। तो मेरे पास भी स्टूडेंट्स जो है वो पुरानी बुक्स वही लाए हैं और उसमें यही लेसन है, नया लेसन जो है उसमें जोड़ा नहीं गया है। 30/5, हाँ जी। तो इसकी जगह अब जो नया लेसन है वो ऐड किया गया है, हुसैन की कहानी अपनी जबानी, बड़ौदा का बोर्डिंग स्कूल, इसी का भाग है, रानीपुर बाजार, ये ऐड किए गए। तो या बोर्ड की साइट से जो है इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ये लेसन आगे दिए गए हैं, तो ये वहीं से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और एक बात और है कि ये अभिव्यक्ति और माध्यम की बुक जो है ये बोर्ड में मिल जाती है। बच्चे ज्यादातर या टीचर्स, मैंने ये कम लोगों के पास ये बुक देखी है। तो ये अभिव्यक्ति और माध्यम 3rd बुक है, ये बोर्ड में अवेलेबल है। हाँ बोर्ड बुक से ही ये ली जा सकती है। आई थिंक ये 140 बोर्ड में आके भी ले सकते हैं। हाँ बोर्ड में 145 रुपीज की है। बहुत अच्छी बुक है। हाँ ये बुक काफी अच्छी है, मैंने भी देखा इसको, कल मैं भी लेके गई थी, मैंने देखूंगी, काफी अच्छी है। तो यही था लास्ट। अब आप जान गए होंगे कि बैलेंस क्वेश्चन पेपर कैसे तैयार करना है। और लैंग्वेज की बात है, अगर इसके बारे में कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। मैम का सेशन बहुत अच्छा गया है, बहुत हम लोग जुड़े हैं। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि यूट्यूब चैनल पे जाके आप इसको देख सकते हैं। बहुत अच्छा सेशन गया है मैम का। तो आप बाकी लोगों को भी बता सकते हैं कि यूट्यूब चैनल पे जाके इसको आप देख सकते हैं। इवन सर का भी बहुत अच्छा था। तो आपसे रिक्वेस्ट है, एक तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वहां पे जाके रिकॉर्डेड जितने भी हमारे सेशन गए हैं उनको जरूर वॉच करें। अभी किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं।